Hello guys, welcome to K1 Smart. Today we'll talk about passive or replacement, phrase replacement. To approach phrase replacement in SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं और 5 श्योर ऑफ शॉर्ट टिप्स जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट है क्या है, ऑलवेज माइंड द सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस एग्जांपल्स, टेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट अंडरलाइन. जो अंडरलाइन only that for parts which does not have any error will be decided the tense of the whole sentence. जैसे दिए गए वाक्य का काल में, अर्थात वाक्य में उस भाग को काल में हमेशा ध्यान रखना जो रेखाकृत नहीं हो और केवल वही भाग जिसमें कोई त्रुटि ना हो, उसे वाक्य को काल को अंडरलाइन किया गया है उसे ही करना रहता है. ये इंपॉर्टेंट टिप्स नंबर 1 है. Next, second, try to understanding the sentence contextually. So sometimes in the phrase replacement errors are not just a grammatical, sometimes they do not fit in the sentence meaningful. So if you have the understanding about what the sentence wants to cover, it will be easy to identify such a इनकरेक्ट फेस. जैसे एग्जाम्पल में हिंदी बताएंगे. टिप्स वाक्य का क्या करता है, प्रोसेसिंग रूप से समझने की कोशिश को कभी कभी वाक्य को प्रताड़ित करने त्रुटि होती है, उसमें जो गलत हुआ था व्याकरण की नहीं होती है और कभी वो वाक्य के रूप से फिट नहीं होता. इसीलिए यदि आपको इस बात को समझ में आए तो वाक्य को वक्त को करना चाहता है और ऐसा वो गलत वाक्य को पहचान करना आसान हो जाता है. वो कभी कभी सेंटेंस अलग और वक्त दोनों अलग होता है, तो इसमें इजी टू अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है टिप्स नंबर 3. दे ऑल टाइम फेवरेट एलिमिनेशन मेथड. दिस हेल्प टू वीट आउट ऑफ ऑप्शन विच यू आर श्योर दे कैन नॉट बी आंसर. मतलब सर्वकालिक पसंदीदा उन्मूलन में विधि या आप उनको विकल्प को छोड़ने में मदद करता है बारे में आपको यकीन है कि वो उत्तर नहीं हो सकता है. टिप्स नंबर 4. कीप इन माइंड सम फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट जैसे रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रामर एंड विच आर आस्क्ड इन एसएससी एंड डिफरेंस एग्जाम. जैसे परीक्षाओं में पूछे जाने में व्याकरण संबंधित सामान्य अवधारणाओं जो पूछी जाती है. Number 5. In many cases of different concepts are mixed in question. For example, both tense and subject verb agreement are tensed together in the question, and different options will be have different concept related errors. One should know how to identify them. कोई मामले में यहाँ पे विभिन्न अवधारणाओं में मिश्रित होते हैं और उदाहरणों के लिए एक प्रश्न में टेंस और सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट दोनों को एक साथ परीक्षण किया जाता है और अलग अलग विकल्पों में अलग अलग अवधारणाओं को संबंधित त्रुटि होगी और पता होने में चाहिए जैसे पहचान कर. तो देखते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ. देखो, फर्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. This concept is a frequency tested in the examination. At the least 3 to 4 questions must have related the subject, verb and agreement. Second, 2 plus infinitive. This concept is also often asked in SSC example which use as a infinitive marker it to each followed by a roof to verb. Third number, helping verbs. One should know this concept also. Example, I need to helping verb and where to place helping verb in a sentence. As in an interrogative sentence, helping verb is placed differently than any arrestive sentence. Fourth, use of phrase क्या है. Sometime in phrase replacement, phrase verb and
Certainly no pressure such as a get used to means become the familiar with a get to know than so that you no longer feel that the things the operation is unusually embarrassing. So, use of correction tense. Use of correction tense is very important and many questions are based on it thought extensively knowledge of tense is not required as a force is on the basic concept related to tense. Fifth, use of correction tense. Use of correction tense is a very important and many questions are based on thought extensive knowledge of tense is not required as a force is on basic concept related to tense. ओके सही प्रयोग का महत्वपूर्ण कोई भी इस प्रकार का धारणा हाल की काल के व्यापक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ध्यान काल से संबंधित होता है बुनियादी अवधारणाओं पर. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jai Hind.